Namaste ji, namaste. Hope you're doing well. Welcome to Courtroom. Let's cover out current affairs for the month of July 2022, national level पे, and then the other sections, of course, for the online batch. Now, first and foremost, ये हमारे भैया जो इतने हंसमुख प्यारे से लगते थे, I don't think इनकी शक्ल ज़्यादा विजिबल होगी thanks to the contrast of the digital board. बट ये पहले जो हमारे जो शेर भैया थे, बड़े ही हंसमुख प्यारे से रोतलू लाल टाइप लगते थे. अब इनको थोड़ा सा ज़रा इनमें masculinity डाल दी गई है और अब ये ferocious बना दी गई. So the national emblem was installed on top of the न्यू बिल्डिंग इन दिस अवतार, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई कि भैया ये ऐसे कैसे तुमने इनको दांत वांत दिखा दी और अब ये डरावने लग रहे हैं, ऐसा कई लोगों का कहना था. नाउ दिस ऑफ कोर्स स्टैटिक जीके का सवाल है, हमेशा नेशनल सिंबल्स वाले टॉपिक में कराया ही जाता है. That this was taken from the lion capital of Ashoka at Sarnath, our national emblem. Now, specifically for the current affair bit, all the relevant details that you need to know. 6.5 meters in height, casted in bronze. So these are single liner MCQs, and the multimodal MCQs consider the following statements about the new national emblem that has just been installed at the Parliament building. ताकि सारी चीजें cover out हो जाएं, just write down these notes. 9,500 kilograms and top of the new Parliament building, which will house 888 seats for the Lok Sabha, 384 seats for the Rajya Sabha. We are on track to complete this project somewhere in October-November this year. And यहाँ पे जो नेशनल एम्ब्लम में एक और जो फ्रीक्वेंट जो एमसीक्यू आता है कि नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सत्यमेव जयते, एंड ये सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया, दैट इज द मुंडक उपनिषद. All relevant details covered. Much more stuff about this in the static GK section of the online batch. Now आगे. Now obviously this goes, the first lecture always goes on YouTube as well, तो YouTube वाले confused ना हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ. Now the existing Parliament building was designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker. These two names are important from the point of view of static GK as well. Who designed the original building? Who was the Governor General of India? Who inaugurated the old building? That's Lord Irwin on 18 January 1927. This building, the present one that we have, वो जो हमारा जो गोल चक्कर वाली जो बनी हुई है, that was inaugurated by Lord Irwin. I think we are pretty much through with covering out all the relevant details that the examiner can ever possibly think from this current affair to ask you, of course, in a national level Central University wala exam. Now the DGCI granted market authorization to Serum Institute of India, as usual, SII, to manufacture the indigenously developed, that is homegrown, India's first quadrivalent human papillomavirus vaccine, QHPV, against cervical cancer, right? Low probability current affair. मैं ज़्यादा इसको नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा, बट ठीक है, अब लिखना तो लिखेंगे. अच्छा, जगदीप धनकर इज द एनडीए's वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, मोस्ट लाइकली द नेक्स्ट वीपी. तो अभी से ही नोट्स में लिख लेते हैं, जब अभी इनके इलेक्शन कंफर्म हो जाएगा तब दोबारा अपने नोट्स में कवर आउट कर लेंगे. आई थिंक अगस्त के महीने में ये काम दोबारा रिपीट हो जाएगा. Now this is red hot. This has to show up in examinations all over the country. Write this down. Fastest land animal, that was cheetah, declared extinct in India in the year 1952, is now being brought from Namibia to the Kuno Palpur National Park, KNP, which is located in the Shiopur district of Madhya Pradesh. So we have entered into an agreement with the Namibian government to get back cheetahs. To which national park, which animal, which country, सारी relevant details have, अच्छा, और which this animal was declared extinct in India in the year 1952. So all of these are MCQs. All of these current affair lectures that are available on our channel as well, the national ones, they contain to the point MCQs, the details that the examiner can ask you. I usually filter out the irrelevant bits. Okay, monkeypox, this is low probability. Kerala में first case पाया गया था, just like with COVID, and it's a viral zoonotic disease, or also known as zoonosis. So this is a kind of a viral disease that is transferable from animals to humans. So it is formally known as a viral zoonotic disease. Monkeypox, the first case from a man traveling back from the UAE to Kerala. Okay, now this guy, दिख रहा होगा, आई थिंक, या इट्स क्वाइट क्लियर.
Thambi. Now this is the mascot of the chess Olympiad, the 44th chess Olympiad being held in Chennai. तो host important है और mascot का name important है, और ये जो घोड़ा जी वाले जो ये जो mascot हैं ये important है. I think जब visual देख लिया तो I think clear हो ही जाएगा और याद रह जाएगा. Now Bhagwant Maan drank water from a river which is sacred to the Sikh community. काली बेन रिव्यूलेट इनको कहते हैं. तो काली इज ब्लैक, जो संस्कृत वर्ड है वेनी उसको पंजाबी में हमने बेन कर दिया है. तो दिस इज द रिवर अलोंगसाइड विच गुरु नानक देव जी अटेन्ड एनलाइटमेंट. एंड वैसे यूजुअली क्या होता है कि in the Sikh belief system, the sarovars inside of the gurdwaras and Hemkund Sahib वाली जो ऊपर जो सरोवर है, they are all considered sacred. Otherwise no other river is worshipped, but this is an exception to that case. So Bhagwan Maan said हमने साफ कराई है, मैं आपको इसमें से पानी पी के दिखाता हूँ. And then he landed up in AIIMS with a stomach infection 2 days later. तो ये नाम, क्योंकि BHU tends to ask these sort of questions कि कौन सी नदी. एक बार आई थिंक 2019 या 20 का पेपर था, उसके अंदर उन्होंने पूछ लिया कैफे कॉफी डे का जो फाउंडर था जिन्होंने सुसाइड करी है, उनकी बॉडी किस नदी में पाई गई थी. तो ठीक है भैया, हम भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं. ओके. डॉक्टर RS शर्मा, CEO ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. दिस इज एन MCQ इन इटसेल्फ. वैसे तो पुराने ज़माने का MCQ हो गया, कोविड वाले 2020 के ज़माने का MCQ हो गया. तो ये कोविन जो है, नाउ दे हैव डिक्लेयर्ड इट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू अदर कंट्रीज. अर्लियर वी हैड ऑफर्ड इट एज अ पब्लिक डिजिटल गुड. नाउ दिस ऑलवेज इज एन MCQ, और ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. ऑलराइट, just as a homework, if you want to dive into more details, please read about the National Health Authority. Is it a statutory body? If it is a statutory body, then under which act has it been created? Okay. National Flag Code 2002 की amendment पे बड़ी सारी protest चल रही है. Now what is the amendment exactly? So earlier the flags that were used to basically be made by the central government, yeah, under full compliance with the laws, you can say, they were only to be made under khadi. बट यहाँ पर अब इन्होंने क्या कर दिया है, दे हैव अलाउड पॉलिएस्टर क्लॉथ. तो काफ़ी जो विक्रेता थे इसके बनाने वाले, तो उनका तो रॉ मटेरियल खादी का सारा बर्बाद हो गया. एंड देन सो नाउ दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस अमेंडमेंट. So this amendment was done under the part of हर घर तिरंगा स्कीम, जिसके अंदर एक और अमेंडमेंट की गई थी, that national flag will now be allowed to be unfurled day and night both. Alright, so the national flag is governed mainly by the National Flag Code 2002. इससे related static GK के MCQ हमेशा होते हैं. Width of the flag, the height width combination, what does orange represent, what does white represent, what does green represent, how many, ये आपके जो चक्र के अंदर how many those डंडास are there. तो ये सारे MCQs आपने as part of static GK निपटाने हैं. You should be knowing each who designed the national flag. You must know all of these on your fingertips if you are to take a law entrance, especially for a Central University one. कृपया करके ये काम आप करेंगे. Okay. Draupadi Murmu is the 10th successive president. I haven't said the 15th president, वो भी आएंगे. Overall, she is the 15th president, but she is the 10th successive president who has taken oath on the 25th of July. Now, this date becomes important. कि mostly presidents have taken the oath on which date, or the last 10 presidents have taken the oath on which date? 25th July. फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे कौन थे जी हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 2 फेमस किताबों का नाम, इंडियन फिलोसफी एंड अ हिंदूज व्यू ऑफ लाइफ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. राइट. फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने ओथ ली थी जनवरी 26, 1950 को, द डे वी बिकेम अ रिपब्लिक, AKA also known as the commencement of the constitution. Okay. Now 50, she is also the 15th president. Overall, she is the 15th president. 10th president the oath lene wali on 25th of July. She is also the second woman president. So who is the first woman president? Pratibha Patil. Zakir Hussain, Fakhruddin Ali Ahmed. Which of the two president या which of the president और bracket में S लगा के जानबूझ के confuse करने के लिए died or rather passed away while they were in office? That's Zakir Hussain and Fakhruddin Ali Ahmed. Who imposed the emergency? Fakhruddin Ali Ahmed. 2020 के तहत ये भैया आए थे, और वहाँ पे एक और ऑप्शन, DULLB 2020 में, और वहाँ पे एक और ऑप्शन था इंदिरा गांधी, और पूरी दुनिया आधी ज़्यादा दुनिया मांग रही थी इंदिरा गांधी. प्रेसिडेंट इम्पोज करता है emergency, आर्टिकल 352 part 18 of the constitution, if I'm not mistaken. All right. And
ये जो प्रथा जो चली 25 जनवरी से, सो नीलम संजीव रेड्डी, ये ज़्यादा नाम दुनिया को पता नहीं, शी कह रहा हूँ, ये ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो दी प्रेजिडेंट, फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ही स्टार्टेड दिस, इज द 6th प्रेजिडेंट ओवरऑल, एंड ही स्टार्टेड टेकिंग, बेसिकली ही टुक द ओथ ऑन 25th ऑफ जुलाई, और तब से ये ऑलमोस्ट एक तरह से कन्वेंशन ही बन गई कि 25 जुलाई को ही ओथ हो जाती है, क्योंकि वो तब से वो 5 ईयर 10 ओवर वो मैच हो वो आके आ रहा होगा. ठीक है जी. अच्छा जी, आगे चलते हैं. Oath was administered by CJI Ramanna, and so oath to the president is administered by the CJI of India. अच्छा, दूसरी बात, CJI भी बदलने वाले हैं. जस्टिस UU ललित will be appointed for a very short period of time. Shortest tenure कौन सा? जस्टिस कमल सिंह, कमल नारायण सिंह, CJI का shortest tenure. All part of static GK. ऐसे ही आपने अपना दिमाग लगाना है कि मेरे से क्या क्या पूछ सकता है, और वो सारी relevant डिटेल लिखते चली जानी है. सिंपल बात है. Okay, 5% GST on pre-packed labeled food items was introduced. आटा, पनीर, कर्ड, एंड 5,000 रुपये से ऊपर अगर हॉस्पिटल में आपके कमरे का भाड़ा है तो उस पर भी GST लगाएंगे. This is classic tactic of a government. If you know a bit of economics, this is classic tactic of the government during inflationary times. They want more and more money to come in. तो यहाँ पे अब ये आटा, पनीर, दही को भी नहीं छोड़ेंगे, और GST काउंसिल, और केवल इसमें मोदी जी को गाली नहीं पड़ती है, सारी GST काउंसिल विच इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑल CMs ऑफ ऑल स्टेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल अग्रीड टू दिस. सो दिस इज नॉट अ वन पार्टी टैक्ट. ऑल, वो इस हमाम में सब नंगे. अगर कोई ज़्यादा आपको नेता पसंद हो, सारे के सारे इकट्ठे यहीं पर हैं. तो 5%, इंक्लूडिंग मोदी जी बाय द वे, 5% GST लगा दिया गया. 5% GST की फिगर AILET और CLAT वाले तो पक्का ही लिखे. अच्छा जी. देन प्रेसिडेंट यहाँ पे जो हमारे आई थी द्रौपदी मुर्मू जी, दैट्स द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट. शी basically greeted the nation with a Johar greeting. Johar is usually a tribal greeting, just like Namaste, but formal name उसका जोहर है, ये नाम याद कर लीजिए. Okay, now MP recorded the highest tiger deaths in 2022. That's 27. MP को 2018 में tiger state भी कहलाया गया था because it had the why in 2018, because the tiger census is conducted every 4 years, so now it's due. And ये आपका tiger state जो यहाँ पे मध्य प्रदेश को कहलाया गया because it had the highest tiger population at that particular moment of time. Okay. India's first passenger drone was unveiled. That is, the name is Varuna, and this is a high probability current affair. लिख लीजिए. Himachal Pradesh became the first state to connect all registered commercial vehicles equipped with vehicle location tracking device (VLTD) with emergency response support system (ERSS). Now these vehicles can be tracked anywhere in the country through VLTD. वगैरह जी, ये क्या है, सिर्फ ये डिटेल लिख लीजिए. HP first state, make short notes, to connect all registered commercial vehicles equipped with vehicle location tracking device, so they can basically track out all of the commercial vehicles that are registered in the state. This is again an extremely high probability current affair. So KFON, Kerala Fiber Optic Network. Kerala is the first state to have its own internet. So the Sarkar, it has now its own version of Sarkari internet, formerly known as KFON. ओके जी, आगे चलते हैं. Lok Sabha on Friday passed the Indian Antarctic Bill 2022. I think I checked it on PRS. The Rajya Sabha has also passed this. The key point to notice for this, ये जो bill की जो main जो महत्व है इसका, extend the application of domestic laws to research stations set up by India in the Antarctic region. So all of the domestic laws that we have, they will apply to all of the research stations in Antarctica. So Indian Antarctic Bill, and this is being done because we signed the Indian ये आपका जो the Antarctic Treaty in, we became a signatory in 1983. This treaty was well brought into effect in 1959. हमने बाद में साइन करी थी 1983, और अब हमने उसको एक कानून भी बना दिया to implement it much more. Now this is extremely crucial. आएगा ही आएगा, टपकेगा, प्रकट होना ही होना इसने एग्जाम में. 5 new Ramsar sites, 49 plus 5 now. Earlier 49 थी, अब 5 हो गई तो 54. So how many Ramsar sites are there now in India? That's 54. Okay. Now first international bullion exchange. Now what is a bullion exchange? This is a kind of a market in which gold and silver is traded. So first international bullion exchange of India, and the third exchange of its kind in the world was unveiled, I think, by PM Modi, and this is formerly known as IIBX in the gift city of Gujarat. Gift भी है, कोई normal वाला gift नहीं है, just an abbreviation. Gujarat International Finance Tech City. Hope you are pausing and then keep on basically taking notes. Vikrant, or rather the project name IAC-1, was handed over
to the Navy. जब ये commission हो जाएगा तो it will be formally known as Vikrant. Hopefully it is not too bright and hopefully you can see it. Okay. Now as of today there are 52 tiger reserves in India. अभी हमारे जो environment minister ने कभी कोई speech दी होगी, मेरी news feed पे आई होगी तो मैंने लिख लिया. 52 tiger reserves in India, the latest being Ramgarh Vishdhari in Rajasthan. So the latest tiger reserve to be added or to be recognized in India is रामगढ़ विश्वधारी अंडर राजस्थान. अच्छा, एनडीए में एनटीसीए के ऊपर मैंने स्टैटिक जीके वाले सेक्शन के अंदर लेक्चर करा हुआ है. दिस विल कवर आउट ऑल डिटेल्स. गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन सेमीकंडक्टर पॉलिसी. द यूसीसी कहाँ पे दे रखा है जी? इट्स अ डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 44 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सेबल, they're non-justiciable under Article 37. And UCC बनाने की कोशिश की जा रही है in Uttarakhand to implement UCC, which state already has a UCC, that's Goa. तो उत्तराखंड में the panel is being headed by Ranjana Prakash Desai and she is also the first woman chairman of the Press Council of India. ये नाम याद रखें. And she was also I think heading the J&K Delimitation Commission. पिछले वाले महीने के अंदर हमने एक बात करी हुई है. Okay, India's first autonomous navigation facility TIHAN, TIHAN, is launched at IIT Hyderabad. TIHAN का मतलब क्या है? Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation. So this is going to be studying Tesla-like full autonomous driving system. So TIHAN, TIHAN, this abbreviation becomes important. And with that, we'll sum up July के national level के current affairs. Now the international space, etc., other sections are to obviously follow. All right. Hope this has been of help to you. I wish you all the very best in your preparation. Take care. Bye.